हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी होम्योपैथी। सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेफाइटिस मेडिसिन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एंड दिस इज़ अ सीरीज ऑफ द बुक ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द पॉलीग्रस्ट। एंड आई होप कि आपको इस सीरीज़ में जो भी मेडिसिन मैं डिस्कस कर रही हूँ उसको समझने में काफ़ी हेल्प हो रही होगी। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच अदर वीडियोज़ एज वेल, नीचे कॉमेंट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट जो है वो मेंशन कर दी है, तो आप उस पर क्लिक करके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अभी मैं स्टार्ट करते हैं। So yeah, I has an indisposition to any kind of work. But when I obliged to sit and work, I feel a sort of anxiety and restlessness. So basically, जो ग्रेफाइटिस के पेशेंट हैं उनको कोई काम करने का मन नहीं करता, बट अगर इनको ज़बरदस्ती बैठा दिया जाए कोई काम करने के लिए तो उनको बहुत एनजाइटी होती है और रेस्टलेस फील होता है। एंड दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ resolution. My intellectual capacities are usually very low, and irresolution is already there. And therefore, if I take any kind of job in my hand, I do it very slowly. तो बेसिकली ये जो ग्रेफाइटिस के पेशेंट हैं ये काइंड ऑफ अ वेरी लेज़ी पर्सन, जिनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है वो भी कम है, साथ ही साथ इनका डिसीज़न लेने की पावर भी इनके अंदर नहीं है कि मुझे बैठ के काम करना ही करना है। नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। और ये जो भी काम करते हैं, अगर इनको कोई काम सौंप दिया जाए तो उसका वो बहुत स्लोली स्लोली करते हैं। आई हैव अ लॉट ऑफ डलनेस एंड इट इज़ वन ऑफ माई की। नोट दैट आई हैव डलनेस ऑफ द माइंड आफ्टर सिस्टा। तो बेसिकली सिस्टा मीनिंग इज़ कि दोपहर में जो थोड़ी सी नैप लेते हैं, झपकी लेते हैं, तो उसके बाद ग्रेफाइटिस के पेशेंट को बहुत डलनेस फील होती है। तो अभी तक इस लाइन में ये समझ में आया कि जो ग्रेफाइटिस के पेशेंट होते हैं वो काफ़ी डल होते हैं, माइंड से भी और फिजिकली भी, अभी तक जितना हमने पढ़ा है। मोस्टली यू विल फाइंड मी एज लेबरर्स, विलेजर्स, ट्रक ड्राइवर्स, एंड ड्यू टू दिस रीजन ऑफ माई बीइंग इन द क्लास आई एम लेस सेंसिटिव फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। सो क्योंकि ये काम ऐसे करते हैं, लेबर हैं, विलेजर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो ये बहुत ही कम सेंसिटिव होते हैं फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। एनी टाइप ऑफ एनालिटिकल, intellectual or scientific work is very difficult for me. Even when doctor asks me about my symptom, I answer only superficially, and therefore he finds it difficult to make contact in any real way with me. So आपको ये समझना है कि जो ग्रेफाइटिस के पेशेंट होंगे वो आपको बहुत अच्छे सिम्टम नहीं बताएंगे, बहुत सुपरफिशियल सिम्टम बताएंगे। I usually has tendency to grow fat, and especially this is found in females. तो याद रखना, F से fat, F से female, तो female में काफ़ी fat देखने को मिलता है। I am chilly person, and it is one of my specific symptom that I suffer from sneezing and photophobia in the morning after waking. I usually suffer from constipation also, and this constipation is so severe that 3, 4 or 5 days passes without urging. तो बिना अर्जिंग के भी वो 3, 4, 5 दिन भी बिता सकते, इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है। दिस इज़ समथिंग वेरी पेक्यूलियर टू मी दैट आई कैन नॉट मेक इवन द सिंपलेस्ट डिसीजन, लाइक आई गो इन टू अ स्टोर एंड स्पेंड आवर्स ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द थिंग इज़ गुड और नॉट, एंड फाइनली आई फेल्स टू मेक अप माई माइंड एंड लीव द स्टोर एम्प्टी हैंडेड। मतलब इतना टाइम वेस्ट कर दिया और कुछ लिया भी नहीं। माई मेमोरी इज़ पुअर फॉर रिसेंट इवेंट्स एंड इवेंचुअली माई माइंड बिकम्स एम्प्टी. There is an absence of thoughts. By and by, I start feeling that my mind is not working properly and that I'm unable to understand whatever is going around. And that's why a fear settles down in my mind that something bad is going to happen. My all emotional and mental symptoms get worse in the morning and especially on waking. At this time, I don't want to do any kind of work, especially if it involves any intellectual effort. But in evening, I feel aroused, excited both mentally as well as physically. Very oftenly, you may find me as a pessimist, and in this condition, I used to talk a lot about death. Even you may also have the symptoms in my childhood. As a child, I were very much interested in funerals, graves, death. I asked questions like, what will happen when I am dead? Due to this pessimistic state of my mind, I always sees the bad part of everything.
while at work. A very small obstruction is enough to make me confused, and then it seems to me that this will never going to be all right. Due to this tendency of getting confused in every trifling matters, I cannot take even a easy looking decision. तो ये डिसीजन लेने की पावर इनके अंदर नहीं होती ग्रेफाइटिस के पेशेंट्स में. और ये हर चीज़ में ना पहले बुरा ज़्यादा सोचते हैं. दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक, दे आर वेरी पेसिमिस्टिक कि बुरा, मरना, ठीक है, इस तरीके से सोचते हैं. यूजली आई एम वेरी sensitive to music. Listening it increase my sadness and even I start crying also. I'm sympathetic person too. I love church or trample music and infernal hymns, but music causes sadness in me. And peculiar thing is that I were already in depressed condition. Music increases it much more, so much that even sometimes I start crying on my own condition. I'm depressive and tired person with a little energy, and therefore I has inclination to sit. As a female, my menses were usually scanty, but leukorrhea is copious. I also suffer from dim vision, and that is also especially during menses. Somewhere in my past history, I usually suffers from skin eruption. My peculiar and characteristic eruption is moist eczema, oozing a yellow and sticky discharge, mostly behind the ears or in the bends of the joint. This yellow and sticky discharge is characteristic of my skin disease, which usually oozes out after a scratching. तो खुजाने के बाद इस तरीके का discharge होता है. I also has complaints of many cracks on my skin. They are painful. My nails are brittle and deformed. My hair falls out or tangles easily. मतलब जल्दी बाल उलझ जाते हैं. And therefore you may find baldness in little children of my type. Another symptom on the head that would find is dandruff. Another इसमें dandruff भी देखने को मिलता है. If anyhow my eruption were suppressed, it can cause great sufferings to me, and this may be well developed asthma, headaches, duodenal ulcer. I often suffer from burning and cramps in my stomach, which get relieved immediately after eating. Due to my clumsiness and vision related problems, I effort to do any kind of the work. My mother striking my another striking symptom is numbness of the extremities, and this may affect the arm, hand, feet, fingers or toes, but most frequently involve the forearms. Generally, this numbness is associated with the drawing and cramps. Has an aversion to meat. Even I don't like the thought of it. But I love chicken. Meat पसंद नहीं है, but I love chicken and has desire for it. ये आपको ध्यान रखता है. During childhood, very peculiarly, I has an aversion to sweets and an aversion to salt food. Together with these, you will find an aversion to fish also. तो सिर्फ पसंद है इसको तो चिकन, उसके अलावा सबसे अवर्जन ही है. ऑफनली आई सफ़र फ्रॉम पार्शियल और कंप्लीट इनएक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, एंड दैट इज ऑल्सो स्पेशली इन फीमेल्स. एंड in the end, one more important thing I want to share with you, that is most of my complaints were arises on the left side of my body. सो आई होप कि मैंने यहाँ पर जो भी ग्रेफाइटिस के बारे में आपके साथ शेयर किया वो आपको अच्छे समझ में आया होगा. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर दिया हुआ है. नेक्स्ट मेडिसिन आप जो चाहते हो जो कि मैं डिस्कस करूँ, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर इस बुक में होगी तो मैं इस बुक के थ्रू उस मेडिसिन को ज़रूर डिस्कस करूँगी. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड टेक केयर.